I wanted to talk to you about mindset. Now I'm recording this, and जो लोग बाद में सुनेंगे, they can be see the recording also. I wanted to talk to you about something about mindset. I hope अब तक आपने session 1, 2 और 3 देख लिया होगा. We are just again covering the basics, and मैंने session 12 तक share किया हुआ है, शायद 11 तक share किया हुआ है. Where you can see about सब लोग mute कर लो please. You can where you can get to cyclicals, where you can get to basics. रोहित जी आप unmute कर लो. Okay. Where you can get all these kind of things. To you something about mindset. How does the mindset of an analyst has to work? So what I'm showing you is okay, remote location view. My net can also be little flip flop. How do I share my screen? Phone screen. Can you see my phone screen? Is my phone screen visible? We can't see anything. The sharing हो रहा है सर. हाँ अभी दिख रहा है. अभी दिख रहा है ना? Okay, I'm sharing you just phone screen. मैंने अभी एक blog वाले group में आज एक ethos का I had put some credit rating reports. So after learning the basics and सब चीजें करके मतलब अभी तो बहुत सारी और चीजें हैं. You are just going step by step. So how does the mind of an analyst has to work? So you will have to be alone when you are analyzing a business. आप अगर फोन गैजेट पे बैठे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो आपको वो समझ नहीं आएगा. मैंने ये ethos का इसलिए ओपन किया है. मैंने आपको पहले बहुत सारे एनोटेटेड नोट्स भी शेयर किए, बट आई डोंट नो आप लोगों ने उसको कैसे रीड किया या नहीं किया. बेसिकली द आइडिया ऑफ एनोटेटिंग ऑल दिस इज टू फिगर आउट द बुलेट पॉइंट्स कि इसके अंदर क्या हो सकता है. सो लेट्स एनीबडी इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, आई वुड लाइक यू टू रीड व्हाट इज रिटन इन द रैशनल इन दिस रिपोर्ट. प्लीज रीड स्लोली. कोई भी कर सकता है, एनीबडी. थोड़ा जोर से ताकि सब लोग सुन सकें. कोई भी एक बंदा प्लीज टेक अप ड्यूटी टू रीड. Let me do it. खाली underline underline करना. पूरा. Okay. For arriving at the rating, ICRA has taken a consolidated view of KDDL Limited. Okay, sir. Now you are talking to me. Okay, now that means this report is talking about the consolidated. Okay, अच्छा ऐसा है. Then please move ahead. We both are discussing. Like we are in a conversation. We are discussing. Others can listen. Please move ahead. Okay. As well as its subsidiary and associate companies, including Ethos, given the strong operational, financial, and managerial linkages between these entities. The outlook revision factors in the expected improvement in the group's performance, led by stability of demand, witnessed by the manufacturing segment. अच्छा मतलब इसके पास एक डिमांड की स्टेबिलिटी है, यानी कि रेगुलर डिमांड आ रही है. अच्छा, बात समझ में आई. Okay. The healthy book from the manufacturing. Healthy order book. So that means that means he's got pending orders also, and he's getting regular demand. So that is a plus point in my mind. Okay. From the manufacturing segment provides better revenue visibility, which augurs well for the company going forward. Further, the stores operating under Ethos Limited have reopened entirely, and KDDL is witnessing good traction, driven by both online as well as offline channels. अच्छा मतलब हम अभी कोविड के बाद के पीरियड की बात कर रहे हैं. जितने भी लॉकडाउन हुए थे, शटडाउन हुए थे, यानी कि सारे स्टोर्स खुल गए हैं, एंड इसको ऑफलाइन मोड में एंड ऑनलाइन में अच्छी डिमांड आ रही है. So that means the business is turning around. Yes. So basically the thing is I'm talking to myself. That means the business आप पढ़ रहे हो, मैं उसका I'm trying to make notes out of it in my mind. यानी कि डिमांड अच्छी है, इसके पास ऑर्डर बुक है, he is getting traction and he has सारे स्टोर्स खुलते चले जा रहे हैं इसके, एंड ऑफलाइन चैनल एंड ऑनलाइन चैनल में इस पे डिमांड आ रही है. So the report talks about demand. Okay, so let's go further. Please. Yeah, the luxury watches retail business has depicted resilience despite the impact of the second wave of pandemic, with substantial revenue growth in the current financial year as compared to the previous year.
while lease rental concessions. So now I think if the substantial growth in the current financial year versus the last year, that means there could be some spillover demand also. जब लॉकडाउन लगा था और जिन लोगों को डिस्क्रिशनरी वॉचेस लेनी थी या जो इसका प्रोडक्ट है हाई अल्ट्रा हाई वॉचेस लेनी थी, एंड नाउ पीपल हैव गॉट स्कैर्ड, कोविड से निकल के आ रहे हैं, जिंदगी रहेगी तो कुछ काम होगा, so why not spend on our own selves, why not enjoy life? So that is why the revenue has gone up. Okay, now this comes to mind. Okay, so while lease rental concessions during the pandemic supported, uh, so, okay, while the lease rental concessions during the So, pandemic, so that means yeah, all the stores are not self-owned stores. So जितने भी इसने लीज पे स्टोर्स ले रखे थे उन लोगों ने वो जो लीज ओनर था उसने भी इसको वो दिया कि यार यू आर अ गुड पे मास्टर और यू आर अ गुड बिजनेस एंड आई डोंट वांट टू लीव यू. So the lease owner gave the business concessions during the lockdowns because every yes. life was खराब चल रही थी सबकी. Okay, So now this that, comes to me. yeah, So so that improved. that shows that he had some good cordial relations with the lease owners also. So that means he's a Yes. good guy. So that means Okay. this person, the management is a good guy. Go Okay. ahead. So that improved the demand. So that improved the demand in H2 of financial year 22 is likely to result in higher cash accruals. The So rating, that means when the people are buying the stuff from his stores, they are paying upfront cash. So that means his sales are fast. His working capital cycle is low on the collection front. His debtors are low. So that means he's collecting faster cash. Now, should I go and look at the numbers? कि इसके debtors low हैं, ये ज़्यादा हैं. So this is why I'm connecting the story with the numbers now. okay, Move ahead. the ratings favorably considered the rights issue of the ratings favorably considered the rights issue of rupees 25 crores supporting its liquidity position. So that means Major, कोविड में लिक्विडिटी का क्रंच आ गया था, इसलिए उसने राइट इशू करके 25 करोड़ राइट इशू से उठाए उस लिक्विडिटी क्रंच से बाहर आने के लिए. That yeah. means there So was crisis. That is why he was going on concessional release rates, and now the business has started opening up, and he's getting good orders. और इसके liquidity issue भी खत्म हो गया है. So that means all good pointers are coming over here. yeah, But so what's next? majority of which would be used towards working capital in the retail business over a period of time. Now The why rating, work why working capital debtors तो उसको हाथों हाथ कैश दे रहे. So working capital here could be the inventory because जितने stores होंगे उतना inventory तो चाहिए ना. अगर showroom में कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो how will he sell in the offline? So that is why that means he has to replenish his inventories. That is why he is taking this 25 crores of right issue. Okay, now I understand. Please move ahead. the ratings continue to note KDDL's prominent market position in watch component manufacturing as a leading supplier of watch hands and dials. So that means Established, all the companies who are watching watch hands and watch dials, he's the leading supplier and he's got a dominant position. That means he might be the leader of the pack. I'm trying to he start, understand the business. Wow, that is yeah. good again. So KDDL actually started with making watch hands and dials. Okay, now established relationship with leading global luxury watch manufacturers and Ethos position as the largest organized luxury watch retailer in the country. So that means KDD has got good cordial relations with the lease owners. He has got good cordial relations with his suppliers. He has good cordial relations with the people who leading watch brands who are buying the watch hands and watch dials from this KDDL. And Ethos जो उसका segment है उसका is the largest retail brand outlet in the country. So इसका मतलब ये है कि अगर KDD बड़ी बड़ी companies को watch hands and watch dials दे रहा है, so that means tomorrow he can also get subsidized prices. This luxury item country. When hello, am I audible? Yeah, Hello. I think you just went off, sir. वो Then या वो now, मेरे कॉल आ गया था. So that कोई means बात नहीं, KDDL sir. अगर KDDL बड़े बड़े कंपनीज को वॉच हैंड्स एंड वॉच डायल्स दे रहा है तो उसका मतलब कल को ये कुछ हो सकता है कि यार उनसे वो लग्जरी वॉचेस लाके इथॉस ब्रांड के अंदर एक लग्जरी बुटीक बना दे, एक आउटलेट बना दे.
So both the companies are working in conjunction with each other. So if I am supplying to that person, and then I can get his watch and earn good margins and set up my new business, which is retail of watches, luxury watches, which is at house. So things are working in their favor. Okay, Yeah. go ahead. No, sir, but हाँ now it is okay. You'll have to थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा ambiguous है. Yeah, okay. Retail in Okay. the country. Okay, I got it. It's there. The ratings, however, continue to be constrained by the working capital nature of the business, particularly in the retail segment, which is characterized by high inventory requirement. Makes sense ना अगर मेरे इतने showrooms हैं तो उसके अंदर मेरे को stock तो रखना पड़ेगा ना to show. That makes sense. So that is why you had picked up this right issue. Okay, now I understand. Now the dots are connecting. Things are connecting now. I'm getting more sense of the business. Yeah. So further, it Um, faces this demand risk. all, Yeah, sorry. this all you can skip and you can now come to the annotations now. Only the annotations. So it has a stable Yeah. demand. Okay, so it has a stable demand in the manufacturing division along with a healthy order book. So Okay. that means he's got a healthy order book in KDDL division. That is the manufacturing division where he's making watch hands and watch styles for ultra high segment watches like Rolex and Omega and all those things. So that means this is a good sign. Again. That is because he's established relationship with the likes Mm. of Swatch, Tag Heuer, Gucci, Edox. Further, its retail arm Ethos is the largest organized luxury watch retailing in the country and operates out of 47 stores spread across India as of September 2021. So, as of September 2021, they had 47 Wow. stores. Yeah. Wow. He's got 47 stores and he's making the watch hands and the watch styles and he's giving to these companies where he's earning a margin and he's making the bana watch from there and he's retailing it. That means बाकी का जो प्रोसेस है वॉच के अंदर बहुत सेगमेंट्स होते हैं हो सकता है कि यार बाकी के प्रोसेस में मार्जिन कम हो लेबर इंटेंस ज्यादा हो उसमें टेक्नोलॉजी हो जो ये काम नहीं करना चाहता तो ही इज जस्ट मेकिंग द हैंड्स एंड द डायल्स एंड इज जस्ट डूइंग द रिटेलिंग बाकी का पार्ट असेंबलिंग का पार्ट ये नहीं कर रहा ही इज नॉट डूइंग द डर्टी वर्क ही इज डूइंग द गुड वर्क Yeah. So, but under risk of fluctuating demands, it says the company's performance is directly dependent on demand across both the segments, which mainly relies on the ऑब्वियस discretionary spending of the public. So discretionary spending on the public came up to a very high levels after COVID. 2 साल आप घर में बैठे रहे आपको खाने पीने का पता नहीं था आपको बीमारी का पता नहीं था आप सोच रहे थे जान है तो जान है जिंदगी बचेगी तो काम करेंगे यू वर मोर वरीड अबाउट ऑक्सीजन एंड यू वर मोर वरीड अबाउट फेस मास्क एंड नॉट गोइंग आउट एंड स्टेइंग इनडोर्स एंड वो उस टाइम चलता था कि 2 गज दूरी एंड नाउ यू से कि अरे मर जाएंगे तो ये पैसा लगता है कमा के क्या करेंगे व्हाई नॉट स्पेंड इट ऑन आवर ओन सेल्स right? So discretionary income was discretionary demand and discretionary feeling of the people were going high. If you can afford, if you have the money, why not spend it on your own self and enjoy? This was the Yeah. nature of the feeling at that times. बाकी Yeah. वो So, EBITDA you all understand and is yeah. a presence in Switzerland and all this. So why Okay. I'm trying to say, talk to you like this because you have to understand and you have to make a sense. कैसे इसको बंद करेंगे यार चल सब you have बंद to हो make सब. a sense you have to make a sense कि when I'm reading the report, I need to talk to myself. अच्छा ये चीज यहाँ करेक्ट हो रही है अच्छा ये चीज यहाँ करेक्ट हो रही है ओके नाउ आई नीड टू नो चेक द नंबर्स क्या नंबर्स के अंदर ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही until now unless you are not talking to yourself to your subconscious mind you will be not be able to connect the story with the numbers so that is why I said reading the reports चाहे आप पूरा रिपोर्ट पढ़ो चाहे आप एनालिसिस पढ़ो talk to yourself and question your mind. You'll have to train your mind. How do you do all these kind of things? Then only you'll be able to connect everything. Now, KTD this it has a good demand. Manufacturing के अंदर भी उसका अच्छा काम चलता है. वो बाहर डायल्स एंड वो हैंड्स बेच वॉच के हैंड्स बेच देता है. अब सोचने की बात ये है कि इंटरनेट के जमाने में जब एप्पल वॉच आ रही है सैमसंग की स्मार्ट वॉच आ रही है व्हाई आर पीपल बाइंग दोस एक्सपेंसिव वॉचेस बिकॉज इट इज अ स्टेटस सिंबल एंड आपने रोलेक्स की घड़ी पहनी है आप किसी पार्टी में जाते हो यू शेक हैंड्स विद समबडी एंड यू आर वेयरिंग अ रोलेक्स एंड यू आर वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स एंड पीपल थिंक यार ये तो रिच पर्सन है एंड they want to connect with you they want to talk to you and you feel very proud I got this industry and I do this and that so basically everything that is all of it.
kind of a show off, and people like to do show off, right? And to show off, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं who can afford very easily, they can afford and they can lead a such a lifestyle. कुछ लोग ऐसे होते हैं they might not be able to, but they want to do all this kind of show off to just to have an edge in the public, in parties and all. So this business is actually going on the discretionary spend and discretionary thing. So इसका मतलब ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग को ये बेच रहा है, पीपल सोच रहे हैं कि यार कोविड के बाद तो अब तो पता नहीं कब तक जिंदगी रहेगी, कब कोविड हो जाएगा, कब मर मुरा जाएंगे, क्या पता। जितनी जिंदगी है, जितनी सांसें, उतना तो जी लो। दैट इज व्हाई दिस थिंग वाज स्टार्टिंग इन दैट टाइम। लेट्स read the let's read the fourth report. Same thing, you can read the annotation, sir. So this is about Ethos Limited. Okay. So going on the annotation, it continues to witness significant traction in the sales and average So realization. that means sales भी बढ़ती जा रही है and price per unit भी बढ़ता जा रहा है। तो मेरा average realization over a period of say 2 years or 3 years has gone up. Then he says he's got buy on demand. Buy on demand means, and this is मतलब this will increase or this will stay at elevated levels. Buy on का मोटा मोटा मतलब वो होता है। Okay. It also says that means nothing very hard over here. Average realizations are going up. इसका मतलब ये है कि if I am the seller in this business and I am selling you some stuff, you means the public, the customers, the some stuff, और मेरे realizations बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मैं अपना प्राइस माल का रेट बढ़ा के आपको माल बेच रहा हूँ, फिर भी आप खरीदते जा रहे हो, फिर भी मेरी डिमांड कम नहीं हो रही है, फिर भी मेरी डिमांड हाई लेवल पे रहनी चाहिए। So that means he's got some kind of a pricing power and he can increase the prices more than the increase of inflation, which is something unique. Then also he says ongoing store and then there is an ongoing store expansion. Wow, that means he had 47 stores, now he's got 60 stores or maybe 50 stores, right? नीचे लिखा हुआ है अगेन 60 stores, बीच में 10 स्टोर बंद हो गए थे क्योंकि कोविड में वो लॉस मेकिंग हो गए थे, फिर इन्हें 60 स्टोर्स कर लिए। Okay, the retail network expansion despite Ethos plan to bring additional working capital debt. मतलब थोड़ा सा डेट बढ़ाया बिकॉज इन्वेंटरी ज्यादा चाहिए, फिर भी अपना रिटेल नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है, यानी इसको इतना काम है, इसको रीच चाहिए कि मैं इंडिया के हर शहर में जाके अपना एक ब्रांड आउटलेट बनाऊं ताकि लोग आके ले सके। अच्छा, दैट मींस द स्टोरी इज वर्किंग लाइक दिस। Then the rating, however, is constrained by inherent working capital intensity of the company's business, mainly which is mean to adequate inventory. ठीक है, जितना स्टोर खुलेगा उतना इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा। बट अब बात ये आती है कि यार ये ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस कर रहा है कि ऑनलाइन पे कर रहा है। ऑनलाइन पे तो वेबसाइट बनानी है, वहां तो इसको पूरी इन्वेंट्री रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर इसको टाइम मिलता है तो ही कैन असेंबल द गेट द वॉच असेंबल्ड एंड सेल, या ही कैन इंपोर्ट द वॉच एंड सेल। दैट मींस ही इज आल्सो हैविंग फॉरेक्स फ्लक्चुएशन का रिस्क, आल्सो इंपोर्ट आ रहा है सारा का सारा। अच्छा, तो इसमें रिस्क में फॉरेक्स फ्लक्चुएशन है। नाउ सी व्हाट ही सेज है, various segments maintain brand standards displaying products in its customers, which is very obvious. Inventory requirements are expected to increase further. जितने स्टोर बढ़ेंगे उतना इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। Makes sense. Now he's got 60 stores in 23 cities, which is good. And ये सारे brands लिखे हुए हैं where he get all those brands. Now see what he's doing. Witness significant traction in the higher luxury segment. अरे यार, महंगी घड़ी आती है और एक आती है बहुत ही ज्यादा महंगी घड़ी आती है और वो उसके प्राइस बढ़ाते जा रहा है, फिर भी डिमांड कम नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए लोगों की एस्पिरेशन है, दे वांट टू बाय, which has been growing in the past couple of years, and it is year over year after COVID, it is growing, which is something very massive, right? The growth, SSG growth of 30% and which retained operating income, that is all numbers thing. Then opening 40 additional stores by 2025. He's got 60 stores and he's opening 40 more. So you divide 40 by 60, कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया 40 डिवाइड बाय 60? यानी कि धंधा मोटा मोटा इसका 60-70% बढ़ जाएगा। 67%। हाँ, बढ़ जाएगा। That means ESOS is trying to expand in its luxury offering and getting into the new business. And new is a pattern into luxury luggage and international branded jewelry business. यार ऐसी ज्वेलरी जो इंडिया में नहीं बनती, जो बाहर की ब्रांड्स हैं और वो बाहर की ब्रांड से इंडिया में ला रहा है, तो सर बात ऐसी है कि अब हाउस वाइफ विल नॉट ईट फूड, फाइट विद हस्बैंड
पर वो ज्वेलरी पहनना नहीं छोड़ेगी। सॉरी यार, नो ऑफेंस टू ऑल द लेडीज ओवर हियर, मतलब जनरल बात है। Then improvement in the risk profile, continued increase in the top line and sustained healthy performance of overall financial risk profile. ये नया business भी ला रहा है. He's opening 40 more stores, which is a massive expansion, and he has been into ultra high branded watches. He's getting into this luxury luggage, which is also important. And jewelry brands also important. और वो इंडिया में ऐसे प्राइस पे लाके देगा जब आप लोग ही लोगे, बिकॉज ये अल्ट्रा एच लोगों की एस्पिरेशन है. That means the business is going in a very robust direction. प्रॉब्लम क्या है? इन्वेंट्री. जितना ऑफलाइन में फोकस करेगा उतना इन्वेंट्री, जितना ऑनलाइन में फोकस करेगा हो सकता है शायद उतना इन्वेंट्री नहीं चाहिए. देन द मेजर फ्लक्चुएशन इज फॉरेक्स रिस्क. फॉरेक्स अगर कुछ डॉलर ऊपर नीचे हो जाए तो उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन डॉलर का प्राइस गिरता है रुपये में लेके, देन इसको बेनिफिट होता है. दैट मींस हिज मार्जिन्स विल गेट एडेड व्हेन द डॉलर प्राइस फॉल्स, राइट? Because he's a net importer with approximately 40% of his watches being imported. So you see, he's not assembling the watches, he's not doing the dirty work. He's manufacturing the main two components, selling it, and then getting the watches in. So if he's selling it to the brands outside, then that means he's also earning dollars. अगर मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया तो मुझे डॉलर में मिलेगा, और वहां से मुझे इंपोर्ट किया तो ठीक है, कहीं ना कहीं इंपोर्ट विल टेक केयर ऑफ द एक्सपोर्ट्स. So the point of all this short discussion is you have to talk to yourself while you are reading the reports. You have to make sense of these reports. Until and unless you don't talk to yourself, your mind will not flock to how the numbers and how the story connects. Once you do this for few reports, automatically your human mind is so sharp, it will automatically start connecting the dots. अच्छा ये चीज मैंने वहां देखी थी, ये चीज यहाँ से यहाँ कनेक्ट होती है. अच्छा दिस मेक्स सेंस, दिस ओके, डॉलर के प्राइस फ्लक्चुएशन से मेरे को मार्जिन्स बढ़ सकते हैं, एंड डिमांड बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है. अब आप 2021 से या 2022 से इसका प्राइस चार्ट देख लो, चाहे इथॉस का देख लो, चाहे केडिल का देख लो, दिस हैज बीन अ मेगा मल्टीप्लायर. नंबर्स बाद में आते हैं, सेल्स सब लोग एनालिस्ट लोग प्रोजेक्ट करते हैं. हमारा काम नहीं सेल्स प्रोजेक्ट करना, मार्जिन प्रोजेक्ट करना. वो जब नंबर बाद में आएगा, स्टॉक बाद में चलेगा, लेकिन वो स्टोरी क्या है, वो वजह क्या है, ये वो वजह है. और कितनी भी कोई भी आपको रिपोर्ट एनालाइज करके दे दे, आप पढ़ लोगे ना, आप उसको भूल जाओगे. अगर आपको फिर भी लगता है कि आप भूल जाओगे, आपको क्या करना चाहिए? Yes, in the last 5-7 minutes when Rakesh sir, so kind of Rakesh sir, he was reading the notes and I was interrupting him again and again. So sorry for that. But my major focus was to get to the notice that we should talk to ourselves and we should recite these points. And कहते हैं ना, icing on the cake, if you can write these bullet points. So what are the bullet points? The bullet points are he needs high inventory. This is one bullet point. So he needs more amount of working capital because he needs high inventory. Second bullet point, which can is also the risk, is forex fluctuations, right? Third bullet point, the ultra high watches का demand बढ़ता जा रहा है. Okay, wow, that means the ultra high watches का demand बढ़ता जा रहा है. That means high margin products. Then the next bullet point is average realizations are going up. Okay, that means he's increasing the prices over the years. Still my demand is going up. That means my margin expansion is there, right? What are the other bullet points which you can recall? Jewelry and luggage. Which is the best thing ना. 2025 तो अभी Yes. आया नहीं है, और 60 स्टोर से ये 40 स्टोर्स में जा रहा है. और अगर ये चीज आ जाती है इसके अंदर, तो इसके पास मल्टीपल एवेन्यूज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन हो जाएंगे. अभी मेरा एक धंधे का रेवेन्यू आ रहा था, अभी मेरे पास 3 अलग अलग डिविजन से रेवेन्यू आएंगे. माय प्रॉफिट्स विल गो मोर अप. एंड ही नेवर टुक मोर अमाउंट ऑफ डेट. एक बार कोविड में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए 25 करोड़ का राइट इशू किया था, उसके बाद दिक्कत नहीं है. एंड ही इज अ गुड पे मास्टर. कोविड में जो भी इसके लीज वाले शोरूम्स थे, उन्होंने उसको लीज रेंटल कम कर दिया. ओके, दैट मींस हिज ऑल हिज स्टोर्स आर नॉट हिज ओन, ही लीजेस हिज स्टोर्स आल्सो. तो जितने स्टोर बनाऊंगा, जितने रियल एस्टेट खड़ा करूंगा, उतना मुझे कर्जा चाहिए. तो मैंने सारा रियल एस्टेट में गंदे काम है, मैंने खर्चा नहीं कर रखा है. सो दैट मींस इज वेरी स्मार्ट. हेलो Sir, हेलो, yes, sir. Yes, sir. राइट? So this is how you need to talk to yourself, and this is how you need to do all these kind of things. Getting it? Yes, sir. Sir, a question. हाँ.
सर पेज नंबर 2 पे अभी वहां पे क्या लिखा हुआ था कि इसको हेल्दी ऑर्डर बुक है, तो ये तो हम एक्चुअली इथॉस की बात कर रहे थे ना। और सर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने जनरल कंपनी उठाई, मैं पर्टिकुलर इथॉस और केडीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं माइंडसेट की आप बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसी पे बोल रहा हूँ कि माइंड करेक्ट है, बट मतलब ये जो रिपोर्ट है ये इथॉस की है ना, केडीडीएल का इसमें खाली मैन्युफैक्चरिंग का काम है, करेक्ट है? सर केडीडीएल इज द मेन कंपनी, इथॉस उसकी सब्सिडरी है, बट बोथ आर लिस्टेड। बोथ आर तो लिस्टेड। एंड इसमें जो ये हेल्दी ऑर्डर बुक बोल रहा है तो इथॉस की बात वो कर रहा है या इथॉस के केडीडीएल? इथॉस की बात कर रहा हूँ। इथॉस की बात, ओके ओके, हाँ ठीक है, राइट सर, राइट। चलो सर, ओके, बस इतना ही शेयर करना था मेरे को।